कैसे शुरू करना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? और गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एग्जाम इफ यू आर गिविंग इट. ESI में क्या मतलब आपकी स्ट्रैटेजी थी? हाय गाइस, वेलकम टू EduTap. So today I have with me Mr. Divyansh Kumar who has recently cleared RBI Grade B 2022 exam. बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है. I really enjoy talking to him. We were just having coffee before this interview. तो इनसे बात करेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में सुनेंगे. काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है. And let's try to learn from him. And for all you aspirants, I think he can be a role model for your next RBI attempt. So Divyansh, welcome to our channel. Thank you, sir. So how is the feeling, Divyansh? I mean, RBI Grade B officer यार एक तरह से भगवान ही हो अब तो आप, मतलब बैंकिंग सेक्टर के. I usually call के जो RBI officers है, they are IAS officers of the banking sector. सर थोड़ा प्रोसेस होने में डिफिकल्टी है, मतलब अभी जस्ट रिजल्ट केम आउट, तो नाउ आई थिंक आई एम गेटिंग दैट फीलिंग, गेटिंग टू हियर दैट फ्रॉम यू, इट्स अ बिग थिंग, एंड कमिंग हियर फाइनली. I waited for this for the last 3 years. Now I'm finally here. So nice, so nice. देखो guys, एफर्ट डाले हैं सबने जो भी क्लियर करते हैं, तो एक चीज जो कॉमन आपको हर जगह मिलेगी कि हर बंदे ने एफर्ट डाला यार, हर बंदे ने. ठीक है, चाहे किसी ने अपनी वीकेंड सेक्रीफाइस किए हैं, चाहे अपनी नाइट सेक्रीफाइस किए हैं, तो वो बहुत कॉमन मिलेगा. और आई थिंक इस सक्सेस के बाद जो एक फीलिंग आती है ना, वो एक मतलब शायद वो फीलिंग नहीं आती है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में अब IAS ऑफिसर टाइप्स हूँ, बट एक फीलिंग जो आती है वो आती है रिलीफ. मतलब एक जो रिलीफ मिलता है ना कि यस यार, एक मतलब यू हैव क्रॉस सम लाइन एंड नाउ यू कैन रिलैक्स. तो वो एक बहुत बड़ी बात है. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो दिव्यांश, अपने बारे में थोड़ा बताइए यार हमारे व्यूअर्स को, अपने बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा एजुकेशन के बारे में. Sir, I started my graduation in 2015. I was not a studious child. So, मतलब from 2013 the journey started. So, I joined Delhi Technological University in 2015. Completed it in 2019. And entirely, like all along the graduation, the only thing that I did was I played cricket. I played cricket for almost 4 years. Then, like during the last year, placements were going on. I sat for placements, and along with that, I came to know about RBI. So the journey started there. I joined an organization. It's a home appliances based organization named Dyson. So from 2019 to 2022 August, I worked there for 3 years. Good experience. Along with that, I prepared for RBI. And which branch are you passed out from? Sir, it was mechanical with specialization in mechanical. There you see it, guys. So है ना, non-finance background. और UPSC की तैयारी की आपने? बिल्कुल नहीं की है. और वर्किंग एस्पिरेंट भी है. देख लो आप, जो हम ये कहते हैं ना कि सर मैं तो वर्किंग हूँ, आई एम फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड एंड आई हैव नेवर गिवन UPSC. यार आपके सामने बैठा है बंदा, देख लो इसको. ठीक है, सो ये सारे डाउट्स अपने दिमाग में से निकाल दो यार. द लाइव एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो वेल डन दिव्यांश. थैंक यू. Having so many challenges, psychologically they can be challenges, right? कि मेरा तो कहीं बनेगा ही नहीं, but he has still proved himself. So that's great. So you started your preparation in 2019. Yes sir. During the last year. ठीक है. Almost complete होने वाला था graduation. Then I started. So 3 years it took you to finally crack this exam. Yes, complete 3 years. So पहले 3 अटेम्प्ट सीरियस थे या ऐसे ही बस के दे आए? सर 2019 में when I started, तो usually there is one important thing that you should study in a circle, or at least you should be aware. ठीक है, तो उस टाइम पे I was like I kept myself ghosted सब लोगों से, और I started the preparation and I had that feeling that I'll crack it in the first attempt. ठीक है, but now if I think about it, I would have not. मतलब अगर देखा जाए कि I was not aware, I was not ready for phase 2. phase 1 नहीं हुआ था उस टाइम पे 2019 में, but awareness बहुत जरूरी थी that point of time. तो तब ये स्टार्ट हुआ था. तो मतलब अभी जब आपने पहले 2 अटेम्प्ट्स में फेलियर देखा in 2019 and 2021, so was it kind of a setback कि यार अब छोड़ देता हूँ, अभी क्या होगा, या you had somewhere inside you के नहीं यार मैंने सही से दिया ही नहीं, अब 2022 में अच्छे से दूंगा और क्लियर करूंगा? मतलब did you face some struggle mentally, or was it like कि नहीं अब अच्छे से करूंगा? सर एक्चुअली गलती पता थी मुझे कहाँ हुई थी. लाइक इन फेज 1 रीजनिंग मतलब रीजनिंग जो था वो बहुत ही गंदा गया था, तो उसकी वजह से नहीं हुआ था. इन फेज 2 आई न्यू दैट ड्यू टू वर्ड लिमिट एंड टाइम इशू, time management, I was not able to complete the exam. So mistakes pata thi, but again as a student it's a setback when you don't see your roll number in that list.
the mains list. So it happened in 2021. I gave mains का पेपर थोड़ा छूटा मेरा, but at the end मतलब नाम नहीं आया. But there are few things that keep you moving. मतलब setback तो होता है, it take time to process it. But as a student setback होता है, but you need to get out of it. And it's not there like कि आप ही उससे निकलोगे. There are few things happening around you that keeps you moving further. और टाइम नहीं लगता, अगली नोटिफिकेशन आ जाती है, thanks to RBI. ये बहुत सही है. इनफैक्ट मतलब मैं तो जितने भी अपने एस्पिरेंट से स्टूडेंट से मिला हूँ, यही बात कॉमन है कि यार जस्ट कीप गोइंग. आई मीन यू विल फाइंड योर प्लेस सम डे. तो इन्होंने भी बहुत प्रोग्रेस किया है. 2019 में आई थिंक यू वर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स. तो यार तब तो ऐसा लगता होगा कि यार मैं तो क्या ही क्लियर करूंगा. फिर 2021 में ही वाज नॉट एबल टू गेट एन इंटरव्यू कॉल. प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस दिया, बट इंटरव्यू कॉल नहीं आया, राइट. और 2022 में इंटरव्यू कॉल आया. अब नेचुरल प्रोग्रेशन ये होना चाहिए था कि इनका सिलेक्शन नहीं होता और 2023 में जाके होता, बट ही क्रैक्ड इट. बहुत हो गया था कि नहीं, बहुत हो गया अब और नहीं वेट करना है. दैट्स राइट. और आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मुझे बता रहे थे, योर मोटिवेशन टू वर्क फॉर आरबीआई, राइट. सो नॉर्मली पीपल वांट टू वर्क फॉर आरबीआई कि यार अच्छी सैलरी है, मेट्रो पोस्टिंग है, रिस्पेक्ट है, दैट्स आईएएस ऑफिसर्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, फिर वर्ल्ड बैंक में पोस्टिंग मिल जाएगा, पैसा है, मतलब काफी सारे फैक्टर्स है. बट यू जस्ट लिसन टू हिज ट्रू मोटिवेशन. जरा बताओ यार. Firstly, I came to know about RBI. There was one senior who cracked it in 2018. Nalin Chaudhary, you were saying. Nalin Chaudhary, sir. So he left his job. He was already working in a good organization, matched up with RBI, but he left it and came to RBI. तो तब मुझे लगा कि बात है. Then again, I had a general interest in general awareness और politics में थोड़ा interest है, sports में है, तो काफी मजा आता था पढ़ने में. But the major one was in 4th year, due to some reasons I have to leave cricket. I wanted to pursue it professionally, but वो नहीं हो पाया. But again, RBI, like RBI ads or like I know the back structure जो होता है. Umesh and all they are. Umesh Yadav, KL Rahul, Ishan Kishan, Shahbaz Nadeem, and all of it, like they play for RBI whenever they get time from the international tours. तो क्रिकेट वाला था कि I can, like as a child, I used to think कि I can pursue my cricketing career there. In RBI. ठीक है. आई डोंट नो द रियलिटी ऑफ इट. ठीक है, आफ्टर गेटिंग इनटू इट क्या है अभी भी आई एम प्लेइंग क्रिकेट. बट उसके बाद वो मोटिवेशन आई थिंक प्रीलिम्स जब नहीं हुआ तो वो थोड़ी सी खत्म हुई. देन आई लाइक मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में. गॉट टू लर्न समथिंग न्यू. तो उस फायर के साथ तो प्रोग्रेस हुआ, बट इट स्टार्टेड विद क्रिकेट. यू सी दिस स्टोरी गाइस. आई मीन क्रिकेट खेलनी है इसलिए आरबीआई जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उमेश यादव और केएल राहुल के साथ खेलने को मिलेगा. वेल दैट्स रियली आई मीन यूनिक. बट एनीवेज, एज ही सेड, वंस यू आर इनटू इट, यू लर्न योर मोटिवेशन, यू लर्न योर थिंग के अभी फाइनेंस भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको उसमें इंटरेस्ट आया और इन्होंने उसको क्रैक किया. सो दैट इज रियली नाइस. बहुत अच्छी यूनिक मोटिवेशन है. ये क्रिकेटर बनना चाहते थे और आरबीआई पहुंच गए हैं, पर वहां जाके क्रिकेट जरूर खेलें. जरूर सर. चलिए अब थोड़ा और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. सो व्हाट वाज योर मेन सोर्स यार? कहाँ से आपने पढ़ाई की? मतलब कि यार एक होता है ना कि यार मैं यहाँ से आपको भरोसा था कि यहाँ से पढ़ूंगा तो एटलीस्ट काफी सारी चीजें मेरी कवर हो जाएंगी. तो एक सोर्स आपका वो क्या था? Sir, EduTap was the prime source. Like in 2019, I got to know about the course. It was coming up with a discount, so I bought the entire bundle of it. Okay, so it was a complete video source. So I had all the notes in 2019. I started the preparation. Then COVID came in. I kept my preparation on. Summary sheets थी मेरे पास downloaded. तो I completed the syllabus from there. मतलब सारा तो नहीं हो पाता बट जितना होता था together. तो EduTap was the source. So primary source was that. Apart from that, GA के लिए Affairs Cloud. So I have this habit. I think most of the students have it, that I used to write and notes, then I used to learn. मतलब I can't learn without writing. Be it anything. So I used to write up daily notes, like daily date notes, which were there. Cloud of Affairs Cloud used to provide that. So that one. Then I used to supplement the GA section with the EduTap CA magazine. So EduTap was the primary for, because ESI and finance management, you can't cover it from different sources. Like there are books in the market, but that's a tedious task. So if you have the content with you, like if you have the entire whatever is there in the syllabus, if you have all of it,
then you are already ahead of a lot of people. That's what I think. आपने अभी जीए की बात की, आपने फेस क्लाउड पढ़ा, तो ये काफी बच्चे बोलते हैं, तो आई जनरली रिकमेंड, आई मीन बीइंग अ पार्ट ऑफ एडुटैप की, आप एडुटैप, तो क्या आपको ऐसी कुछ न्यूज मिली जो आपको लगता है कि बाकी बैंकिंग मैगजीन्स में नहीं थी बट सिर्फ एडुटैप में ही थी? सर होता था लाइक व्हाट आई यूज्ड टू, और पेपर में पूछी जाती है, सर व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज लाइक क्लाउड अफेयर्स क्लाउड से नोट्स बनते थे, देन आई यूज्ड टू मेमोराइज इट वेरी वेल. Then I used to go to the EduTap magazine because whatever news I have already done, so I used to skip that. उसके बाद भी वो equivalent notes जो होते थे, like only the important news I used to write down. तो उसके बाद भी वो क्लाउड अफेयर्स के बराबर ही होते थे, ठीक है. तो दैट मतलब सप्लीमेंट एक्चुअल में होता था न्यूज. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज वन क्वेश्चन दैट केम इन एडुटैप मैगजीन में था, वो राइसिना डायलॉग. आई रिमेंबर इनफैक्ट जब वो क्वेश्चन आया तो मेरी टीम में किसी ने आके मुझे बोला कि सर ये शायद नहीं है. मैंने कहा दिस वी कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट टू हैव इन आवर मैगजीन, सर्च करो. और वो मिला था. तो इट वाज दैट क्वेश्चन, मतलब मैंने भी देखा था वो, बट आई स्किप दैट. जब मैं उसको सप्लीमेंट कर रहा था, ईएसआई सेक्शन में था वो, तो आई लेफ्ट इट. बट इट केम, कई बार माइंड में होता है ना कि अफेयर्स क्लाउड में नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा. सिर्फ अफेयर्स क्लाउड लाइक फिल्टर आउट जब करते थे तो न्यूज होती थी, बट वी यूज्ड टू गेट दैट फीलिंग अगर प्रिपरेशन हो रही है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज रिलेटेड टू द एजुकेशन और द हेल्थ सेक्टर, तो वो स्किप किया. तो देयर वाज सब लाइक कंटेंट होता था, तो सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट रिलाई ऑन वन सोर्स. तो अफेयर्स क्लाउड के साथ आपने एडुटैप के साथ सप्लीमेंट किया. दैट्स गुड. अच्छा, कोई ऐसी 3 चीजें बताओ जो आपको लगता है कि आपका सक्सेस जो है वो उन्हीं चीजों के कारण है, मतलब या मेजर आप उनको क्रेडिट दोगे कि यार ये चीजें शायद इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. बताइए आप. मतलब एक तो वैसे बड़ा कॉमन होता है, आई थिंक आपकी परसिवियरेंस और आपका एफर्ट, वो सब में कॉमन चीज मिलेगी, है ना. ऐसे यहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि कोई 10 दिन पढ़ के एग्जाम क्लियर कर गया होगा, बट ऑब्वियसली यू टेल योर रीजंस. So first and foremost was family and friends. Like I had the like times were not good, but I had the support of the family and friends. And when you are studying, you are preparing for something. You are at home, so you get frustrated sometimes. But family and friends particularly. So have different friends for different situations. Like my cricketing group is there. Apart from that, my school group is there. So that people like actually supported me. Like it was not that they held my hand and like मुझे preparation कराई. It was a support. It was a support. Apart from that, secondly, it was failure. Guidance is very important in any exam if you're giving it. Again, just like the content, it also keeps like moves you ahead of a lot of people. So guidance is one thing. In phase 1, in the first attempt 2019, I panicked in the reasoning section. Okay, so there was a mindset that cutoff gonna be 120 or 130. Firstly, you need to score in GA, maximum in reasoning. But the first question I attempted in 2019 from reasoning was a puzzle and a difficult one. So just in case if someone would have told me that time that puzzle is the last thing you have to attempt. First, you have to go through the coding, decoding, syllogism and all that stuff. Last thing you should do was the puzzle. That small guidance. I think that is why somewhere I was not close to the cutoff. Again, in 2021, if someone would have told me that 600 words and 400 words and 4 of them in each paper you have to write, that is difficult. So you don't have to think and write. You have to think while writing. Okay, so that is why I missed few of the questions. So those guidance which were there, that came through the failures for me particularly. I learned it by myself. So failure was the second thing which was more important. So family, failures, and third is content. I had the rich content from EduTap every time. Like I have this leverage कि मैं खरीद सकता था उसको. Most of people don't buy it, but I think content is something that puts you forward. That's of right. many people, because you can't there are so many things that you need to study. If you're, let's say if you don't have the content, then you have to go to affairs cloud every day. You have to go to PIB specifically for ESI section. PIB, post that you need to be aware of the government schemes. Like EduTap provides schemes tab, like monthly, whatever the news be, it will come in that document. Repetition hogi, but it will be there. So government schemes, reports, so you can't even the evaluation part and the interview guidance, वो सारी missing हो जाती. Yeah,
हाँ That is ये जनरली ना वैसे मतलब एक इंडिया में शायद ये कोचिंग इंडस्ट्री ने खुद ही खराब की है। एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, पता नहीं ट्रुथ है, कि मतलब कई लोग तो कोचिंग का नाम सुन के उनको लगता है कि ये तो बेकार ही होगी, कि ये सब लोग तो गंदा ही प्रोवाइड करेंगे, सब ठग रहे हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन हैज कम इन। तो यहाँ पे मैं जस्ट ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, वो आई थिंक दिव्यांश भी एग्री करेंगे। सी कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक यस वी आर प्रोवाइडिंग अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट, बट उसके साथ में जैसे दिव्यांश ने बोला कि गाइडेंस, एक इकोसिस्टम जो हम देते हैं आपको, राइट? आई मीन वी आर देयर फॉर यू, टू गाइड टू यू, टू मोटिवेट यू, टू हैंड होल्ड यू, सो दैट यार आपको कोई दिक्कत ना है। कंटेंट है, उसको कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितनी देर में क्या करना है, वी आर देयर टू गाइड यू। तो आई थिंक वो ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा जब भी आप किसी से कोचिंग लेते हैं, और वो ट्रस्ट बनेगा तभी आप कोचिंग ले पाएंगे। Exactly. Right. So that was about the 3 points I wanted to discuss where he attributes success to. Now coming on to, अभी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं हम, जस्ट रिटन फ्यू पॉइंट्स यार, ताकि कोई मिस ना हो जाए, तो बाद में लोग बोलते हैं कि सर आपने ये डिस्कस नहीं किया, वो नहीं किया। तो अभी थोड़ा स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। I'll basically go to phase 2. phase 1 में वैसे दिव्यांश के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं। आई थिंक 62 कट ऑफ थी, 63। सो उससे मतलब 7 मार्क्स हायर, विच इज अराउंड आई वुड से 7/6, 60 इज अराउंड काफी हाई परसेंटेज है। मतलब वो 10-12% हायर स्कोर किए, तो वो लग 7 मार्क्स नहीं है, बट वो एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो इन्होंने बेसिकली जो उसमें बोला है कि ही हैज स्कोर्ड वेरी गुड इन जीए, राइट? तो हम उसके बारे में बात करेंगे, बट एज पार्ट ऑफ फेज 2 इटसेल्फ, करंट अफेयर्स में, या ओके चलो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो जीए की प्रिपरेशन आपने कैसे की? मतलब इतना अच्छा स्कोर किया, आपका इंटरेस्ट एरिया है, लेकिन फिर भी यार मतलब एक तरह से रट्टा ही लगाना होता है। तो सर क्या आपने कुछ फिल्टरेशन टेक्निक्स यूज की कि बस इतना ही पढ़ूंगा, इसको अच्छे से करूंगा, या फिर काफी ज्यादा किया लेकिन रट्टा अच्छे से लगाया, प्रैक्टिस अच्छे से, क्या कैसे किया? मतलब सर फर्स्टली मतलब ये रियलाइजेशन थी पहले अटेम्प्ट से कि जीए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज it will help you for that 80 marks in prelims, post that in ESI, finance, and also in descriptive. So GA will help you in, except for the quant and the reasoning section, it will help you everywhere. So GA I had a particular interest, मतलब अगर मैं affairs cloud पे आज भी जाता हूँ तो I read all the document जल्दी से, ठीक है? I think that should be a habit, particularly. या फिर EduTap magazine कोई पढ़ रहा है, daily there are videos. Then you just need to give 15-20 minutes daily. आप उसको देख लें एक बार। Apart from note making अगर है, you can do it later on, but at least you can see that. मेरी कुछ टेक्निक थी क्योंकि मैं लिखता काफी था, तो फर्स्टली आई यूज टू नोट डाउन ऑल दी डेट वाइज करंट अफेयर्स। तो यूजुअली क्या रहता है हमारे माइंड में, एक छोटा सा डाउट होता है कि अगर एक भी डेट मिस हो जाती है यार उसी से क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा। ये होता है जो लोग स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते हैं ना उनको ज्यादा होता है। ये पर्टिकुलरली प्री के बाद ज्यादा होता है, लाइक अगर मेंस देने वाले हैं तो हमें लगता है गैप वाले जो दिन हैं, क्योंकि हम सोचने में लगा देते हैं कि मेंस में होगा या नहीं होगा, बट अगेन इफ यू मिस दोज तो फिर अगेन यू हैव टू कवर अप इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो जीए का पर्टिकुलरली डेट वाइज पहले मैं करता था, तो आई यूज टू टाइप इट in a laptop. Post that मैं क्या करता था, 5 सेक्शन में उसको डिवाइड करता था. That was my strategy, like layman, but I had given so much time on that, and now it's all worth it. I can say that. So the sections were important reports, schemes. So there was one section. उन्हीं dates से I used to pick up एक section बन जाता था important dates का. Apart from that, there was one section for RBI heavy news. Like if there were anything that comes up, notification भी उससे cover हो जाती थी. एक RBI का section होता था. Then very important thing for prelims, name, place, things. Like we used to play that game. So the title was name, place, thing. I used to pick up every name, appointment कोई हुई है. There was a news on the particular place. तो मैं उसको पिक करता था. Then important days का एक होता था और एक government का होता था. Like anything comes up related to the government. तो वो date wise का filtration फिर होता था 5 category में इनमें. Then अगर आप फेज 2 जा रहे हो, लाइक दिस टाइम व्हाट आई डिड इज, क्योंकि कोई भी न्यूज़ है, लाइक लेट्स से 28 मई को प्रीलिम्स था, तो जनवरी टू 28 मई और 18th में वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कवर अप, एंड पर्टिकुलरली अप्रैल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ और मार्च. तो फेज 2 में जैसे मैं गया तो इट टुक मी 5 minutes
From that file, I removed important days completely because that's not gonna come in phase 2. Exactly. ठीक है, जो भी मुझे न्यूज लगी फिल्टर आउट करने की आएगी नहीं, because when you are preparing you get to know about it that this news is a government scheme, this will definitely come up. तो फिर मेरे 3 सेक्शन बने उससे, RBI से भी NABARD, one was data. ठीक है, डेटा का like I used to revise it daily. किसी की भी रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट या कुछ भी है, उससे भी क्वेश्चन आया था, तो आई यूज्ड टू फिल्टर आउट इन 3 कैटेगरीज, RBI, सेबी, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, दैट्स ऑल, 3 कैटेगरी. तो फिल्ट्रेशन जो हुआ, प्लस मैंने सप्लीमेंट किया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, EduTap हो गया, पोस्ट दैट रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आई एम टेकिंग ऑल ऑफ इट एज अ GA बिकॉज इट हेल्प्स यू इन ESI एंड फाइनेंस. तो that was very important. Filtration, apart from that, मेरे जो notes हैं, notes जो लास्ट तक थे, that was one thing. अगर मुझे revise करना है, I was able to revise all of it from January to May or June, let's say, for mains. I was able to do it in 2 hours complete because I've gone through them many times, so many times. I know कि कहाँ पे कौन सी न्यूज़ लिखी हुई है, ठीक है. And that filtration, note making helps you. You can't like सबकी अपनी अलग अप्रोच होती है, तो some students प्रिंट आउट लेते हैं मंथली मैगजीन का एंड दे टेक इट, सो दैट्स देयर वे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लास्ट में हमें ये नहीं सोचना, लाइक अर्लियर आई टेल यू, जो लास्ट वाला मेंस था 2021 का, मैंने ऑफिस से भी ऑफ लिया 5-6 दिन का, एंड आई डिड नथिंग बिफोर द मेंस. ठीक है, नथिंग. आई वाज सो नर्वस कि मैं अब कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, बिकॉज लास्ट कमिंग अप डेज मेंस था पहले टाइम. आई वाज सो नर्वस. दिस टाइम आई न्यू आई हैव टू कीप माई नोट्स रेडी. ठीक है, दे शुड बी अपडेटेड टिल द वेरी लास्ट डेट एंड यू जस्ट नीड टू स्पेंड टाइम ओवर इट, दैट्स ऑल. तो फॉर नोट मेकिंग का जो थोड़ा था मेरे में, लाइक मुझे लिखना है और टाइप करना है. टाइपिंग वॉज ईजी, यू कैन फिल्टर आउट वेरी क्विकली कौन सी न्यूज़ हटानी है. दैट वॉज द मेन. तो बेसिकली यू हैड स्ट्रक्चर्ड योर कंटेंट इन सच अ वे कि वो बाद में अच्छे से जल्दी से रिवाइज हो पाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल है. इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस पे बाद में. सो अभी FM के बारे में बताइए, मतलब आउट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स मेनली FM, ESI और इंग्लिश, आपने सबसे ज्यादा टाइम किसकी प्रिपरेशन को दिया? FM को. क्यों? व्हाट वाज द रीजन? टाइम कम लगा FM में, बट FM वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. व्हाई? Firstly, I think in the last EduTap does it, like they take out all the marks of the students who have cleared the exam. So someone scored 48 out of 15 objective. Okay, that you can't do in ESI. Like this time, I think even 20 marks out of 50 was a big achievement. Very tough. Yeah. So and one thing is, it's the static part. Even if someone sits today, he can't prepare for ESI because mostly the content that is gonna come will be dynamic. Like the current affairs and all, or the government schemes, anything, any report. But for finance and management, it's all the static part. Apart from that, even the RBI notification, there are not many notifications that comes up in a month. And finance in news, which was there's a separate section that the EduTap also gives in the end. And there are not so many news. So you can cover it later on also. But the finance and the management section, that's static. If you have the notes, I had the notes from EduTap. All the summary sheets, all the concept notes, I made the notes out of it, and because I knew that this area is scoring. Because if I won't do it, somebody has already done it. Because right. That's the scoring area. That's the basic you have to cover. Average score in FM is around 75, I think, whereas in ESI it's around 60. So you can see the difference. तो FM में तो I think to be at par आपको 75 से ऊपर स्कोर करना ही है. स्कोर भी सर, कवरेज इज आल्सो इम्पोर्टेंट. मतलब अगर लेट्स से इफ समवन हैज लेफ्ट एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, so there are high chances that one question can come in the descriptive section, and let's say if you leave it and you don't know the other question also on that particular chapter, you don't have the command, then that's not the thing that the one. इस बार वही हुआ. I remember, I think वो corporate governance में से ही 4 क्वेश्चन आए थे CSR पे. So that was covered in corporate governance, I remember. So काफी लोगों ने वो corporate governance काफी holistically cover किया हमने, around 40-45 pages में. So generally you lose patience, right? के बस इतना पढ़ लेता हूँ. So that is the trick, I think. I guess sir, if मतलब वो question like I attempted, I think there were 4 questions and 2 of them was right for me and 1 was wrong. It was not a guess, I would say, because sometimes you have to follow your gut and instinct also, especially in the GA section or in the objective part. If you go through corporate governance, you would know that what is the asset
classification or how much should be the turnover. Exactly. So that thing comes up. आइडिया हो जाता है, वो like एक इंट्यूशन चीज डेवलप हो जाती है कि बाकी सारी चीजें ऐसे हैं तो ये नहीं भी पढ़ा तो इसका ये आंसर लग रहा है. And you can't read everything that is there. हाँ, ये बहुत सही बात बताई. कई बार हमें लगता है कि सब कुछ पढ़ेंगे तभी सारे क्वेश्चन होंगे. The moment you are 70% done, I think बाकी 30% में से जो क्वेश्चन आएंगे आधे आप सिर्फ प्रीवियस नॉलेज से गेस करके कर लेंगे. वो एक चीज डेवलप हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बाकी ईएसआई में क्या मतलब आपकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर्स आते हैं बट डिस्क्रिप्टिव भी है, उसके लिए स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा. सो एक क्या स्ट्रैटेजी लेके चले थे आप? सर आई थिंक लास्ट 2 अटेम्प्ट्स जो थे तो आई हैव नॉट कवर्ड ऑल दी चैप्टर्स फ्रॉम ईएसआई. अभी भी मैंने सारे नहीं किए हुए हैं, बट लेट्स से द फर्स्ट यूनिट व्हिच इज देयर वेयर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम कम्स इन. Apart from that, poverty alleviation, environmental issues. First unit, Sarah. Yeah. So at least you should know the definitions of it. And I have gone through the chapters very intensely. I've practiced even the descriptive part of it, like the previous year questions only. That is the most important unit. You can't skip that because in ESI descriptive, they can give you 3 questions out of those 6 options, even through that unit. Exactly. Post that, the second part that comes in, I think it is Indian economy, where the union budget and priorities of the economic survey comes in, and all of those chapters. So that's basic. You need to cover the union budget. I think you can do it separately also. Then you come to the syllabus and you tick it that I have already done it. Okay. The third one, which is there, international economic organizations and all, the BOP part, which is there. So you should know that what happened in 1991. The last unit which is there, which is particularly related to human development, social sector, health, education. So I think current affair comes from that particular side. Related to that, because उसमें थ्योरी ऐसी कुछ है भी नहीं है. मतलब what would they teach you in under health, education and gender issues? Multiculturalism is the first chapter that you need to cut off because you don't have to go through it. Or human development is important. Human development is important for the index, human development index. So the static part makes you more aware about the dynamic part. Yes. Because then you can connect, this question is related to this chapter. But I think वो static part social issues का बहुत जल्दी पढ़ा जा सकता है. बहुत जल्दी सर. Like मतलब हमें ऐसा नहीं गिनना चाहिए कि 10 चैप्टर है. Yeah, but like mental block होता है. Like it happened with me also. Till the very last attempt, I was not able to cover the whole syllabus of ESI. Whole syllabus was not the target, but the main chapters that were there. But again, that's just a mental block. Completed syllabus coverage is the most important thing. You can't skip, and you don't have to get into the skin of that particular chapter. Exactly. That's not required. एक right balance लेके चलना पड़ेगा. ऐसा भी नहीं है कि आप एक चैप्टर में घुस गए और उसमें 3 दिन लगा दिए. That's not the. So I think 2 points जो ये बार-बार बोल रहे हैं, which I am able to infer is कि एक तो coverage बहुत अच्छा होना चाहिए. मतलब those are not the days now कि क्या important है, क्या पढ़ें. मतलब that strategy बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है. दूसरा, कंटेंट आपके पास एक ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रस्टेबल हो और आप जल्दी से उसको पढ़ पाएं, rather than searching hell lot of things out from 10 areas. वो तो फिर आपका टाइम उसी में चला जाएगा, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा. सो ये बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं 2 चीज़ों पे, तो आप इसका पूरा ध्यान रखिएगा. करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है ईएसआई में? सर ESI में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट एंड क्योंकि मेरा प्रिपरेशन जो था दैट स्ट्रेस्ड ओवर 3 years, तो गवर्नमेंट स्कीम आई न्यू स्कीम टैब्स अगर कोई खोलता है इतनी प्रिपरेशन के बाद, then you would know that the old scheme that was there, PM Kisan, that keeps on repeating. You don't have to do it freshly, but government schemes and reports are very important. Again, with that, if you can do PIB, or you can cover the entire EduTap, GA plus ESI portion, that will help you. PIB खुद से करना तो काफी tedious है, क्योंकि शायद आप 1-2 महीने कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के पास जाके फिर मैंने भी वो नहीं किया. But again, that depends on students. I would not suggest, like, that's important, very important. So these were the 3 things, like the reports और schemes. आपने जो हमारा scheme step document है वहाँ से की? Yes sir. और रिपोर्ट्स के लिए भी आपने जो हमारा मंथली कंपाइलेशन है रिपोर्ट्स का, that's very rich content, like I would say, because all the reports are there. You get it, like few of them, if you come back to a fair cloud, you'll get some of the reports there, but if you're getting all the reports in one document, and that is for 20-30 pages,
then तो आई थिंक अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो शायद काफी लोग जो जीए है वो अफेयर्स क्लाउड से ज्यादा पढ़ते हैं, EduTap से सप्लीमेंट करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स एंड आरबीआई नोटिफिकेशंस, आई थिंक वो एक्सक्लूसिवली यहीं पे एक फुल कवरेज मिलेगा आरबीआई के लिए, क्योंकि ये ज्यादा बैंकिंग में नहीं पूछी जाती है. like if you hover around the website and for each particular date, वो तो पॉसिबल वो possible नहीं है. वो पॉसिबल. So that's why I think if you're getting the content at one place, that's again keeps you ahead. ग्रेट. थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे बात कर लेते हैं. वो एक बड़ा कॉमन एरिया है. अल्टीमेटली 300 में से 200 मार्क डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के. तो उस पे आपने मेहनत की थी या फिर बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ा था? Sir, first two attempt में like it came in 2021 and I did not practice it at all. Again, most of the people don't. Okay, because like, again mental block रहता है कि ये बाद में हो जाएगा. And there are some student who like on the YouTube there are keyboard noises like because you get distracted in the exam, so they keep it on. I know such students also. They keep it on and then they write the answer. So like it depends on how like I won't doubt the dedication of a student because I haven't done it last year, but this time also I was not willing. But there's one friend, Vimal. We started the preparation. Like he is not into RBI, he's into other exams. He pushed me to a limit. Like he used to give me 2-3 questions daily. I used to submit them. But ऐसे दोस्त होने चाहिए. हाँ सर, ऐसे दोस्त जरूर होने चाहिए. Like also like to some people you can't submit your answer because no answer is perfect and people can judge you very quickly. But he stood with me like a rock, and again he used to give me questions. I used to pass it on to him. He used to check it. Complete questions also. Like I was more like I was nervous about ESI descriptive. I knew that in FM I can cover because I know things. I have covered the concept notes and all. But I was more scared about the ESI part, that what if I won't be able to code the report that comes in, let's say for anything, poverty alleviation or for anything like the environmental issue, sustainable development. What if I won't be able to? What if I won't be able to memorize it at the time of the exam? So that is what like I practiced it for about 10-15 days only, like after prelims, but I did. And it actually helped. And you did practice some, I think, hard content there, right? Yeah. So descriptive writing में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए? क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेरी है कि सर हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से बहुत डर लगता है, और वो डर लगने के कारण लोग लिखते नहीं है बिकॉज दे आर फियरफुल दैट व्हेन दे विल राइट बैड एंड दैट विल नो जस्ट किल देयर कॉन्फिडेंस व्हाटएवर दे हैव. तो कैसे शुरू करना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, और क्या मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत फाड़ू बंदा चाहिए कि जो बड़ी अच्छी वोकैबुलरी लिखे, बड़े फाड़ू सेंटेंसेस लिखे? व्हाट इज द की टू स्कोर गुड इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? I can say I have the worst vocabulary and the grammar skills. I don't attempt grammar questions in English. I just go through the Prezi or the RC. I don't attempt them. But again, one thing as I mentioned that particularly it's the practice. But the one strategy that I have followed particularly, EduTap gives you the model question and answer. And those were not EduTap's made, those were the previous year question. I did go through the structure of them, that how to write the question. So again, you can break the questions into more content. If they're asking you about anything sustainable development also, you can quote any report. Again, intro should be there. That's the basic intro, body, conclusion. But again, if the answer is of let's say you have to write it in 600 words, you have to focus on the body. Intro should be good, but again you can't the time restraint is such that you can't wait, you can't think, you have to think while writing. That's there. So that comes up with practice only. If you memorize, let's say you don't type also, but the thing should come to your mind very fastly. At least you should read before the mains. You should read, and you should have a structure that I'm gonna write this thing there in the introduction, in the body part. If that's not there, practice will help you because not everyone, but most of them, at least top 500 or 600 people are doing it. मतलब वही है कि बहुत ज्यादा हमें शायद सोचना नहीं चाहिए कि परफेक्शन आएगा, बट व्हेन यू प्रैक्टिस तो सारी चीजें, योर टाइपिंग स्पीड, योर ग्रामर स्किल्स, योर पंक्चुएशन एरर्स, आपका स्ट्रक्चर, फ्लो और कंटेंट भी जब आप
डालने की सोचते हो कि कुछ एग्जांपल डालना है, Yeah. वो आदत बन जाती वो है आदत बनती और है। फिर आप उसको डालने लग जाते हो। And no answer is a perfect answer. हाँ। वो हम हर जगह पढ़ते हैं, ये- and that's the real thing. No answer is a ये perfect. बहुत जरूरी है कि लोग मुझे से भी पूछते हैं कि सर इसका क्या आंसर लिखें। नो आंसर इज अ परफेक्ट आंसर। आई थिंक यार बस आंसर ऐसा होना चाहिए कि देखो जो चेक कर रहा है वो एट द स्ट्रेच 50-100 कॉपी चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद शायद ब्रेक लेगा। तो आपकी कॉपी में थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए, एट पार होनी चाहिए कि यार कि ठीक है यार थोड़ा फ्लो लग रहा है, समझ आ रहा है, एग्जांपल्स हैं, तो आई थिंक यू विल गेट गुड मार्क्स। Yeah, है ना, definitely. मतलब बिल्कुल रद्दी ना लिखें, प्रैक्टिस करें, एंड विद प्रैक्टिस यू विल इंप्रूव। यू नीड नॉट बी अ कॉन्वेंट एजुकेटेड या यू नीड नॉट बी वेरी वेल रेड। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट रीड, बट ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल से आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, कोई यूपीएससी लेवल पे नहीं पूछ रहे हैं अभी तो, सो वी कैन हैंडल दैट। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में था, मतलब इन्होंने एक अच्छी प्रैक्टिस की है, तो आप वो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, दैट्स द की, प्लीज रिमेंबर दैट। बाकी सब मैनेज हो सकता है, बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैन बी मैनेज्ड ओनली विद प्रैक्टिस। अभी थोड़ा इंटरव्यू पे भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका, मतलब पहले तो आपको अच्छा लगा जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर आए, सेटिस्फाइड, या लगा कि ठुक गया? Enter होते ही बहुत अच्छा लगा था, like RBI office. So again, as I told you in the beginning, there are some incidences that happens in your life that keeps you moving. So one such difficulty happened before the interview, and that's where I got to know that I have nothing to lose. Okay, like सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है ना कि yeah, I have nothing to lose. So I went there with that sort of confidence. Confidence was the key because I was very nervous. Like even after studying about RBI, the functions, the monetary policy, and everything, for 3 years, for the last 3 years, I was not feeling confident, and that's the worst thing to happen. Okay, so again, I gave mock interviews. It helped me a lot, but again, that confidence was not there. But again, that incident happened, and confidence came in, and there was just one statement in my mind that you have done all of it. Like you can't answer all the questions. Like the esteemed panel, the most esteemed panel. Even I got to know about it later. The chairman sir was there. Yeah, Amitabh sir. He was the additional chief secretary of Maharashtra earlier. So like if he'll ask you a random question. He won't ask you whatever you have studied. You have to go inside the room with that confidence. One such stupid thing happened with me. So they asked me about the coverage, like if some bank goes to bankruptcy, how the amount is covered. So I told them that DIGC covers the amount up to 5 lakh. Okay. So they asked me that let's say I have 2 lakh in my account and this person has 10 lakh. Then how much amount would we be getting? So obviously the 2 lakh one will get 2 lakh because but I was not able to answer it in that nervousness in the room. So obviously the 10 lakh one will get 5 lakh. And I told them this and they laughed about this. So I was nervous about it, but that thing comes naturally. You can't help it. That happens. देखो जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें ये तो एक्सेप्ट करना है कि जो हमारे सामने है वो मतलब हमसे बहुत आगे है। They have 30+ years of experience, जितना हमारा एज भी नहीं है शायद, है ना। So obviously we cannot be better than them, but I think they also understand this limitation. They just want to check यार कि ठीक है बंदा presentable है, personality है, knowledge ठीक ठाक है। Obviously RBI can groom you to any level. So उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, सारे आंसर देने चाहिए। नहीं आता है तो I mean tell them that sir maybe I'm not aware of this. I'll check this later for sure. Maybe I've missed this. तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा? वैसे मुझे ना वैसे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो एक ऐसे ही इंटरव्यू देने गया था एक बार, तो ही प्लेड अ ट्रिक एक्चुअली, और ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। तो वो अंदर गया इंटरव्यू रूम में और ही वाज लाइक वेरी नर्वस फॉर द फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस। ही प्रिटेंडेड टू बी नर्वस, राइट। तो उसने फिर क्या किया, ही टोल्ड टू द इंटरव्यू पैनल, सर दिस इज नॉट गोइंग राइट, आई एम नर्वस। And he took just some 30 seconds break, and he got up, took 30 seconds break, then came back, sat on the chair again, and then he was into his own. So interview panel was really impressed कि यार मतलब ये क्या 360 degree turn around. So ऐसा भी होता है कई बार। Sometimes I mean ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा मत करना। बट मुझे इंसिडेंट याद आ गया नर्वसनेस से, कि नर्वसनेस नेचुरली आती है हमें,
तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए यार, ठीक है, दैट्स नेचुरल, वो एक दो क्वेश्चंस में होगी, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. आई मीन अगेन देयर इज नथिंग टू लूज, नहीं आता है, बट देन यू कैन ऑलवेज ड्राइव देम इन योर डायरेक्शन, जो भी आपको आता है. आप 2-3 चीजों के आंसर दोगे, वो उसी पे आगे आपसे पूछेंगे, तो नीड नॉट वरी. आपसे क्या पूछा इंटरव्यू में? Sir, like it was a profile-based interview. Like the first thing, because I have worked in Dyson, and in one like the nature of duties, I have wrote supervision. Yeah, and that's the key thing that Key thing in RBI. So the chairman sir asked me that what's exactly supervision in a very layman term. Don't tell us like in terms of the RBI working and function. So I told them that in the very layman term. Obviously, that was not the perfect answer. That was the first question they asked me, and I was shocked. I thought they'll be asking me about the introduction and all, but that didn't happen. So supervision. Apart from that, why capital is important for the organization. Second sir asked me that why capital is important. I told them in terms of investment and all, that's played a very important role. So from capital comes up the bankruptcy part, and the third person asked me about how banks cover the bankruptcy part. So that's where DIG, CE, that's where I fumbled and got nervous. Post that there were questions that situation based or the future based question, like when do you think that India can enter near digital economy or near digital transaction based economy. So so that is something you can't predict. Even if I judge my answer now, I told them that it is going to happen in next 5-7 years, but with a confidence. With that, I just told them, because UPI 123 Pay was one thing that got launched, and few other digital things. So I told them that the government is more focused on the feature phone users, 40 crore feature phone users. UPI 123. UPI 123 Pay, and one other thing was also launched. So, so with that, it's not gonna happen in next 5-7 years. We all know. Again, but मतलब वही है कि इसका आंसर आप ये भी बोल सकते थे, सर इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड यू कुड हैव गिवन रीजन, सर मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में अभी लिटरेसी रेट वो पहुंचा ही नहीं है, इंटरनेट अभी रूरल एरिया में पेनिट्रेट ही नहीं किया है, अभी भी कॉस्टली है, सस्ता हो गया बट अभी भी कॉस्टली है. तो इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक, जस्टिफाइंग टू एन एक्सटेंट. बाकी तो शायद वो चेयरमैन को भी नहीं पता होगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू बिकम. But again, it was with confidence. Post that, they asked me like in my hobbies, cricket was there. Apart from that, like I had certain interest in old classical music, like the Hindi music. So there was a funny incident. Like I told them that I had a particular interest between 1960 to 1985, where like the Pancham Da, Kishore Da. So one interview panel asked me that, do you know this song? And he told me this song. I told them this. Sorry, sir, I don't know about it. So the other person told him, sir, this was before 1960. Like that funny there, but again, I was nervous in the beginning, but again, the only thing was confidence, and I don't know where it came from, but that was the best thing that happened. And they didn't grill you on this background कि यार तुम्हारा finance background नहीं है, तुम तो mechanical engineer हो, फिर तुम अच्छी खासी जॉब छोड़कर क्यों आ रहे हो, ऐसा कुछ ग्रिल नहीं किया उन्होंने? Sir, before the interview, I know, and the people around me know that I spent almost, like if I accumulate the hours, almost around 18 to 20 hours on one question. That was why RBI after engineering, or why not engineering further. So that was one question. But in the end, literally, I've called everyone out there जिससे मैंने पहले बात नहीं की, कि जिसने MBA कर लिया, और they have gone through such questions in the interviews. But the only thing that comes up that everyone has their journey, and most of the people, like we know, are engineering graduates, and they are coming up. They just expect your truth. That's all. I think that was the main like the learning I got from this. But question. they didn't ask you. They didn't ask me. Yes. And I spent 18-20 hours. I think that's very common. यार हर दूसरा बंदा इंजीनियर है. इनफैक्ट more than 50% इंजीनियर्स किसको पूछेंगे, जो पता है कि इंजीनियर्स ही आएंगे, इंजीनियर्स ही चलाएंगे, है ना. और क्या पता फ्यूचर में इंजीनियर ही RBI गवर्नर बन रहे हो, पहले भी बन चुके हैं काफी लोग. सो शायद अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. I think that's it. Anything else here you want to share? Maybe last set of words हमारे users, viewers के लिए. Sir, like firstly, because there was upgradation in my journey. Prelims nahi hua, mains nahi hua. So obviously there are people who missed it this time also in mains or the final interviews. But
there will things like the things will happen that will keep you moving. That's the most important thing, and you don't have to stop. If you feel like you have to stop, you can give up. You don't have to, like, your struggle remains with you. I've noticed this thing. Your struggle remains with you. You are not liable. Obviously, you are liable to your family, but you're not liable to tell something or something. You don't have to explain something to the other people. Your struggle remains with you. You're working for yourself. If you're studying, you're doing it for yourself. That's all. So just keep moving. That's all. That's a really nice message. And your struggles, I think, should remain with you. You should remember them also. Yeah. That is what keeps you humble, makes you humble. ठीक है. बाकी यार आप ये हर जर्नी में देखेंगे स्ट्रगल है, और जिसकी शायद स्ट्रगल इज नॉट जस्ट अबाउट सिलेक्शन इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम और समथिंग, जिसकी जर्नी में शायद अभी नहीं है, सिलेक्शन के बाद भी देयर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन योर लाइफ. सो उसके लिए तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, एंड वी शुड जस्ट विन ओवर देम साइकोलॉजिकली. तो आई वुड जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस. ठीक है. दिव्यांश ने किया 3rd अटेम्प्ट में, आप भी हिम्मत मत हारिए. और जो फ्रेशर्स हैं, यू ट्राई टू क्लियर दिस इन 1st अटेम्प्ट. ऐसा नहीं है कि 2nd 3rd अटेम्प्ट में ही होता है, काफी लोगों ने 1st अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है, राइट. एंड वी आर देयर विद यू एट एवरी स्टेप. व्हाटएवर यू नीड, वी आर देयर टू गाइड यू. सो आई थैंक यू दिव्यांश फॉर कमिंग हियर. यार दिल्ली से आए हैं ये, एंड इट्स रियली नाइस मीटिंग ऑल दीज पीपल. काफी हमें भी विंडिकेशन मिलती है व्हाट वी आर डूइंग. सो आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू हिम. And I wish you best of luck. Yeah, ठीक है. RBI में lots of opportunities. I'm not talking in terms of salary. Salary, I think 35 साल के बाद you get satisfaction from your work. पैसा तो मिल ही जाएगा. So there, I think you can do a lot. And they will be the one, as I say, IS officers of the banking sector running the economy and the financial world of India. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye, guys. Have a nice day.